समस्त गुरु वैष्णव की जय। नमाचार्य श्री ठाकुर की जय। परम जगो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोकुल श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोपाल की जय। वृंदावन राम की जय। नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथ धाम की जय। भक्ति देवी की जय। वृंद देवी श्रीमती तुलसी देवी की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। द्वारका धाम की जय। मथुरा धाम की जय। होली मायापुर धाम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन की जय। बृहत पतंग की जय। श्री गौणता की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी प्रभुपाद सुभद्रा की जय। श्री हरिक्रमा की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। नित्य गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to Shri Guru Gadanga Nitya Go Premanandi Hari Hari Bolo. Nitya Go Premanandi Hari Hari Bolo. Nitya Go Premanandi Hari Hari Bolo. Jai Shri Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 9th Canto, Chapter 4, text number 68. श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 9 अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 68। Sarva hridayam mayam. साधवो हृदयं मह्यं Sarva hridayam mayam. साधवो हृदयं मह्यं Sarunam hridayam tvaham. साधूनां हृदयं त्वहं Mad anyate na jananti. मद्यन्यते न जानन्ति Maranyate na jananti. मदन्यते न जानन्ति Naham tebhyo managapi. नाहं तेभ्यो मनागपि Sarva hridayam mayam. साधवो हृदयं मह्यं Sarunam hridayam tvaham. साधूनां हृदयं त्वहं Maranyate na jananti. मदन्यते न जानन्ति Naham tebhyo managapi. नाहं तेभ्यो मनागपि Sarva hridayam mayam. साधवो हृदयं मह्यं Saranam hridayam tvaham. साधूनां हृदयं त्वहं Maranyate na jananti. मदन्यते न जानन्ति Naham tebhyo managapi. नाहं तेभ्यो मनागपि। Next.
Mananyate Namananti Nam Tebyo Manakapi Devoridayam Mayam Saranam Hridayam Aham Mananyate Namananti Nam Tebyo Manakapi. Translation. इसका सरल अर्थ है, The pure devotees is always within the core of my heart, and I am always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anything else but me, and I do not know anyone else but them. Please repeat. The pure devotee is always within the core of my heart. Louder. And I am always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anything else but me. And I do not know anyone else but them. Let us recite the Guru-Purana pranams, please. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Prabhupada Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Caitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padkamalam Sri Gurun Vaishnavasya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savidhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Sri Vishakhanvitascha Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी Since Durvasa Muni wanted to chastise Maharaja Ambrish, it is to be understood that he wanted to give pain to the heart of the Supreme Personality of Godhead. For the Lord says, Sadhunam Hridayam Mayam, the pure devotee is always within the core of my heart. The Lord's feelings are like those of a father who feels pain when his child is in pain. Therefore, offenses at the lotus feet of the devotee are serious. Caitanya Mahaprabhu has very strongly recommended that one not commit any offense at the lotus feet of a devotee. Such offenses are compared to a mad elephant, because when a mad elephant enters a garden, it causes devastation. So, a few words about this first of all. Please listen carefully to the language. It's very important. Since Durvasa Muni wanted to chastise Maharaj Ambrish, it is to be understood that he wanted to give pain to the heart of the Supreme Personality of Godhead. That's a very heavy statement. So,
तो इसका जो सलार्थ है उस प्रकार से है, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चूँकि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करना चाहते थे, इसका अर्थ यह हुआ कि वे भगवान के हृदय को पीड़ा पहुँचाना चाहते थे, क्योंकि भगवान का वचन है, साधुओ हृदयम मह्यम, शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है। It is to be understood that Durvasa wanted to give pain to the heart of Supreme Personality of Godhead. तो चूंकि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करना चाहते थे, इसका अर्थ यह हुआ कि वे भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाना चाहते थे। So a foolish reader might conclude that this only has to do with a Mahabhagavad like Ambarish Maharaj. तो एक मूर्ख व्यक्ति होगा, वह समझेगा कि जो महाभागवत है उसके प्रति ऐसा अपराध करेंगे तब If that were the case, what would be the point of studying Srimad Bhagavatam? तो यह जो है केस स्टडी के समान है, उसमें हम शिक्षा ले सकते हैं। The Shastra is designed by the will of the Lord to teach each and every living entity in the creation, especially within the material universes. तो शास्त्र जो इस प्रकार से लिखा गया है कि हर एक जीव को शिक्षा देने के लिए, जो कि ब्रह्मांड, amongst all those living entities, especially the devotees. और उन सभी जीवों में जो खास करके जो भक्तगण हैं उनके लिए। Because the Bhagavad Purana is for everyone, but it's especially intended for the devotees. तो भागवत पुराण जो सबके लिए, लेकिन खास करके वो भक्तों के लिए है। So we are supposed to learn about proper behavior from the Bhagavad Purana. तो हमें यह शिक्षा लेनी है कि कैसे हमें वैष्णव सदाचार का पालन And from the nectar devotion, जो भक्ति रसामृत सिंधु है, other such shastra. दूसरे ऐसे शास्त्रों के विषय में बतलाया। They are all for the purpose of enlightening us, because we are basically covered by tamagun. तो यह सब हमें शिक्षा देने के लिए है, क्योंकि ज्यादातर हमें Of course, a serious devotee who follows Acharya is technically not under the modes, but the idea is that tama is there, ignorance. तो तमोगुण इस प्रकार से इतना ज्यादा आच्छादित होता है, इसलिए हमें बारंबार पढ़ना आवश्यक है। So the Shastra is for the purpose of enlightening, throwing light. तो जो शास्त्र हैं वो प्रकाश के समान है, हमें वो प्रकाश के मार्ग। The Srimad Bhagavatam begins with that very concept in the first canto. तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत पहले स्कंद से इसी प्रकार से। Listen carefully. Some of you know this translation. आप सब जो है ध्यान पूर्वक इसको सुने, आप में से कुछ लोग इसका अनुवाद को जानते होंगे। This Bhagavad Purana is as brilliant as the sun. जो भागवत पुराण है इतना तेजस्वी है जिस प्रकार से सूर्य। It has arisen in this dark age of Kali. और इसका प्रादुर्भाव जो है कलयुग के इस अंधकार समय में, just so that people can get light out of it. जिस प्रकार से जो and the illustration in the first canto, hopefully you've seen. तो लोगों को जो है इस प्रकार से प्रकाश मिले, आप सबको प्रलय के विषय में बतलाया। Where Shri Vyasadeva is holding up the Srimad Bhagavatam up in the sky. और उसमें व्यासदेव जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम को हाथों पे रखा हुआ ऊपर। And the environment is fundamentally dark. और जो वातावरण है वह अंधकार में है। Where's the tech man? Come on, the volume on his mic isn't loud enough. Tech man, come on, go. Everybody says you're the tech man. Hello, you have the keys to the commander. That means you are the tech man. This volume is fine, but his volume isn't high enough. So, education is the fundamental purpose of the Bhagavatam, to throw light into the hearts of the residents of Kali Yuga. तो कलयुग के जितने भी निवासी हैं उनके हृदय से अंधकार को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम का Bhagavad Purana says that
It is as brilliant as the sun. यह जो सूर्य के समान ही उतना तेजस्वी है। It's beyond the material sun that is shining in the sky. तो इस जो भौतिक सूर्य है उसके अलावा भी बहुत प्रकाशमय जगत है। Because it is, Bhagavad Purana is actually imported from the spiritual world. ये जो भागवत पुराण है वह आध्यात्मिक जगत से आया है। Of course, on another level, the sun in one sense is also not mundane, although it's composed of earth, water, fire, air, etc. तो यह जो सूर्य है वो भी साधारण नहीं है क्योंकि वह भी पृथ्वी अग्नि Because जल the वायु sun आकाश से बना है। is the incarnation of Lord Vishnu also, and Surya Dev is incarnation of Lord Vishnu partial. तो ये जो सूर्य देव है वो भी भगवान विष्णु के एक आंशिक अवतार In the है। final analysis, most things in the material world are actually have some auspicious connection with the Lord. तो ज़्यादातर चीज़ें जो कि इस भौतिक जगत में है वह भगवान से ही संबंधित है। Even his material energy is non-different from him. तो ये जो भौतिक शक्ति है वो भी भगवान से अभिन्न है। So here we see that the Lord is saying, if somebody causes pain to his devotee, it causes pain to him personally in the heart. तो यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं अगर किसी भक्त को पीड़ा पहुँचती है इसका मतलब मुझे पीड़ा पहुँचती है। If you think, oh well, that's because Maharaja Ambarish was Mahabhagavad, a great devotee, so therefore it has nothing to do with me. तो कोई ऐसा सोच सकता है कि जो अम्बरीश महाराज थे महाभागवत थे बहुत बड़े भक्त थे So I उससे can मेरा offend कोई as many संबंध devotees नहीं as I like. I can say harsh things. I can. It starts with the tongue. It starts usually Vaishnava Acharyas. It starts with the tongue. तो ये जो वैष्णव अपराध की शुरुआत होती है जीवा से होती है। So the nectar instruction gives the advice. Srila Rupa Goswami, not advice, the order. तो श्री उपदेशामित्र में हमें रूप गोस्वामी जैसे शिक्षा देते हैं। Vachavega manasakroda veda. वाचो वेगम मनसः So anyone who is aspiring to be a Vaishnava, then that shloka applies. Vachavega manasakroda vega. तो जो व्यक्ति भी एक वैष्णव बनना चाहता है तो उसको यह नियम का पालन करना पड़ेगा। One must have control of the tongue. तो उसको अपने जीवा पे लगाम रखनी पड़ेगी। So every day we are saying, before taking prasad, तो हर एक दिन प्रसादम ग्रहण करने से पहले हम बोलते हैं Anyways, the purport is in this great poem by Srila Bhaktivedanta Thakur. तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यह लिखा है, इसका तात्पर्य है Of all the senses, the tongue is the most voracious and difficult to control. तो जितने भी इंद्रियां हैं ये जो जीवा है वो बिल्कुल अनियंत्रित रहती है। So we see from our own practical experience, from ourselves with honest evaluation. तो इसीलिए अपने आप को हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ निरीक्षण करना पड़ेगा। From observing the behavior of other neophytes. और जितने भी नए लोग हैं उनके The Vaishnava Acharyas begins with the tongue in most cases. हम यह देखते हैं कि जो वैष्णव अपराध है वो शुरुआत जीवा से होती है। Unnecessary criticism of other बिना किसी Vaishnavas. कारण के होता है। And there are some devotees whose constant diet is poison actually. They're not real devotees, not at all. They're just some kind of shadow. Maybe they stick their hand in a bead bag, but constant diet of apparatus beyond belief. तो कुछ ऐसे ही भक्त हैं जिनका हाथ हमेशा माला में ही होता है लेकिन जीवा पे बहुत जहर उगलते रहते हैं। Actually, they killed their Bhaktivedanta Bija a long time ago with that kind of constant foaming at the mouth. Bhagavad says foaming at the mouth. Pa, ba, ma, fa. Foaming at the mouth. तो इस प्रकार से उस भक्त ने अपने भक्ति लता बीज को कभी गला घोट करके समाप्त कर दिया। They derive some sort of sick pleasure in blaspheming Vaishnavas, real Vaishnavas, because they are not Vaishnava at all. That's not a Vaishnava does not blaspheme others. तो एक वैष्णव होते हैं वो कभी भी दूसरे वैष्णव की निंदा नहीं करते। तो ऐसे लोग जो दूसरे वैष्णवों की निंदा करते हैं वो वास्तविक रूप से वैष्णव बिल्कुल भी नहीं है। If there's a legitimate reason
to criticize Vaishnavas, and sometimes there is a legitimate reason. Of course, you have to have the adhikar for it. तो कई बार इस प्रकार का अधिकार भी होता है बोलने का, There's a etiquette to be observed. लेकिन उसमें भी एक सदाचार का होना चाहिए. A brand new devotee, for example, should not criticize senior devotees. खास करके जो नए भक्त हैं उनको उन्नत वैष्णवों का Spiritually, they have their diapers on, so how they can criticize somebody who's a 20-year devotee? This is not appropriate. तो एक नया नवेला भक्त आया 20 साल पुराने भक्तों की निंदा कर रहा है. If they have some issue, then they have to go through authority. अगर वो And somebody that has adhikar, they can bring it up respectfully and properly with the person that the newer devotee has got some issue with. Then their counselor is supposed to help that neophyte so that the issue can be settled peacefully. तो अगर इस प्रकार से नए भक्तों की समस्या आती है तो अपने काउंसलर के थ्रू, मेंटर के थ्रू इस समस्या का निदान करें. But those who just spout off at the mouth, regurgitating garbage, तो जो लोग इस प्रकार से कूड़ा कबाड़ा बोलते रहते हैं हमेशा, they are spiritually doomed. तो वो डूब चुके हैं. If they manage to go on putting on a show of putting their hand in a bead bag, or their self-conception is that they're a devotee, this is actually complete illusion, because they're not a devotee. Devotees do not behave like that. They just don't. तो वो बिल्कुल भक्त नहीं है, बस वो दिखावा कर रहे हैं कि बीट बैग में अपना हाथ चिपकाए हुए हैं. If we want to know how devotees behave, then we have to study the lives of Vaishnava Acharyas. तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि किस प्रकार से एक वैष्णव का आचरण होना चाहिए. In the biographies of the Vaishnava Acharyas, we see the behavior of Narottam Das Thakur, Sri Nimbarkacharya. So many are great acharyas. तो हमारे समक्ष बहुत सारे उदाहरण हैं वैष्णव आचार्य गण हैं, खासकर नरोत्तम दास Krishna Kaviraj Goswami, Srila Bhaktivedanta Thakur, भक्तिविनोद ठाकुर, ऐसे बहुत our own सारे. Srila Prabhupada also. श्रील प्रभुपाद जी के जीवन Great से humility. Natural, not artificial. Not, the English word is contrived. Contrived? Manufactured. ऐसा नहीं कि वो दिखावटी विनम्रता दिखला रहे हैं, उनका नैसर्गिक विनम्रता. Once Srila Prabhupada was in the airport, तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी हवाई अड्डे पे थे, and somebody announced, all the devotees come over this way. और एकदम से यह बोला गया कि सारे भक्त इस तरफ आ जाएं. So Srila Prabhupada got up along with the rest of the devotees and was going to go with the crowd, और उन with the भक्त group. समूह में श्रील प्रभुपाद जी भी थे. प्रभुपाद जी भी इस तरफ आ गए. Somebody said, not you, Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद जी को ने बोला. So the point is that he never thought himself superior. Actually, in his heart of hearts, Prabhupada was Acharya for so many thousands of devotees. तो प्रभुपाद जी जो हजारों भक्तों का आचार्य हैं, Yet in his heart of hearts, he never actually felt superior. That's a fact. और अपने हृदय में वो कभी भी इस प्रकार का भाव नहीं रखते कि मैं उन्नत हूँ. When he was offered one of the first Vyasasans in Los Angeles, 1969, तो 1969 में जब उनको पहले व्यास आसन लॉस एंजलिस में दिया गया, he sat down on the Vyasasan and he had tears in his eyes. और जब वो व्यास आसन पे बैठे तो उनके आंखों में, He said, I'm not fit, meaning for this level of honor and उनके worship. आंखों में आंसू आ गए. तो उन्होंने बोला कि मैं इस योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ, But on behalf of my Guru Maharaj, I must accept. लेकिन गुरु महाराज के बिहाफ में मुझे लेना पड़ रहा है. This is the parampara process. इसी को परंपरा कहते हैं. That in our line of discipleship succession, the Diksha Gurus, they are performing the service of instructing and enlightening devotees on behalf of the previous acharyas. तो वो अपने आप में कुछ लेना नहीं चाहते, लेकिन गुरु परंपरा के आदेश में उनके लिए But their initiated disciples are their own disciples. That's the difference between on behalf of, the concept on behalf of, and taking the wrong position that they aren't real disciples, that only Prabhupada is the only bona fide guru. This is not supported. तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद एक अधिकृत गुरु है. ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है. गुरु परंपरा के द्वारा आदेश प्राप्त कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है. But still the bona fide concept is that Guru Parampara means on behalf of the previous acharyas,
that the whole process is going on, the instruction is going on, the shastra is going on, the honor is going on, all of that on behalf of the previous acharyas. तो जो पूर्ववर्ती आचार्य है उनके कहने पे ही, उनके द्वारा आदेश प्राप्त कर ही सारी की सारी चीजें आ रही है, शास्त्र आ रहे हैं, प्रक्रिया। And when somebody tries to digest that pratishtha or honor, तो वह व्यक्ति को प्रतिष्ठा इत्यादि जो है उसको पचाने की शक्ति होती है। it's like overeating on pizza, cake, and halva and all kinds of things on top of each other when your digestion is not very good. तो अगर कोई व्यक्ति बहुत पिज्जा खाएगा, हलवा खाएगा, बहुत सारी चीजें खाए, लेकिन उसकी पाचन शक्ति कमजोर है, you're going to get sick. तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। Moan and groan, moan and groan, moan and groan. Oh, stomach can go. सुबह सुबह उसकी ऐसी स्थिति होगी। So amongst my god brothers who fell from very high positions of called acharya by everybody and called guru by everybody, but they fell from that exalted position. In each and every case, it was because of Vaishnava Purana. In each and every case, you analyze why did they fall down. तो जितने भी प्रभुपाद जी के इस प्रकार के शिष्य हैं, महाराज जी के बहुत सारे गुरु भाई जो उस प्रकार से पतित हुए, तो वहाँ कारण देखा जाएगा तो एक ही हुआ। They all knew the story of Durvasa Muni and Ambarish. They all knew that story. They knew the Shastra superficially. उन सबको यह शास्त्र पता था, ये सारी कथाएं पता थी दुर्वासा मुनि के, अम्बरीश महाराज। They thought aham bhogi, aham ishwara. This does not apply to me. तो वो ऐसा सोचने लगे कि मैं भोगी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, I am beyond this. और मैं इन चीजों से परे हूँ। One of my god brothers had a complaint to one of the leading personalities in Iskcon at that time, one of the top leading personalities in Iskcon at that time. तो एक समय में एक व्यक्ति ने एक बहुत ही बड़े उन्नत सन्यासी को, पुरानी बात है, He made his personal complaint to his leading god brother. और वो उस प्रकार से बहुत लीड कर रहे थे संस्था को। The leading god brother just looked at him with a sarcastic smile. और उस व्यक्ति ने, सन्यासी ने बहुत ही व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से देखा इनको। So what are you going to do about it? उसने ऐसा बोला कि अगर ऐसा है भी तो तुम क्या कर सकते हो? I'm the emperor, you're the fool, you're the servant. You are impotent, you can't do anything. I am the emperor. You're criticizing the emperor. This attitude. तो उनका भाव ये था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ का शासक हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। Well, we see here that Durvasa Muni caused pain to the heart of the Supreme Personality of Godhead by blaspheming his pure devotee. तो यहाँ हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि ने भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाई उनके भक्त की निंदा करके। So the main point is we should not think this applies only to Mahabhagavad. It applies to all devotees in all circumstances. यहाँ पर मुख्य बंधु यह है कि हमें यह नहीं सोचना ये सिर्फ अम्बरीश महाराज के लिए लागू होता है, या जितने भी। And here the rasa between the Lord and his devotee is revealed. यहाँ पर एक भक्त और भगवान के बीच का रस है, वह प्रदर्शित हुआ है। Rasa, it's important to understand, does not just mean Krishna dancing with the gopis. If somebody thinks that's the only conception of rasa, they really have a poor knowledge. तो हमें ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ रस का मतलब भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों के बीच का रास नृत्य हुआ। Rasa means the loving exchanges between the Lord and devotees. रास का मतलब है भगवान और उनके भक्तों के बीच का आदान प्रदान। So here we see directly Krishna's own statement, or Lord Vishnu's own statement. यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण अपनी वक्तव्य। The pure devotee is always within the core of my heart. जो शुद्ध भक्त होते हैं सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। And I am always in the heart of the pure devotee. और मैं सदैव भक्तों के हृदय में रहता हूँ। That's again in Krishna in the Bhagavad-gita says, those who render me devotional service, they are in me, I am a friend to them, and they are a friend to me.
और गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा है तो वो व्यक्ति मेरा परम Same मित्र है, concept. मैं उसका परम मित्र हूँ. The Lord and His devotees are on the absolute platform. This is the point. On the absolute platform. It's not, here's the devotee, here's the Lord. No, it's not like that. तो ऐसा नहीं है कि ये भक्त है वो भक्त नहीं है, वो सारे के सारे एक ही स्तर पे होते हैं. Only a neophyte can think like that. Well, here's the devotee, here's the Lord. And so there are two different situations here. तो एक नवशिक्षा भक्त जो है वही ऐसा समझता है कि ये भगवान अलग है, भक्त वो इस प्रकार. Of course, that's not to be confused with Mayavadi philosophy. We're not saying it's all one. But on the absolute plane, the point is, otherwise, why do we say that the Lord and His devotees, the spiritual masters, worship as good as God? तो ये कोई मायावादी तथ्य नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जो हम गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु की पूजा करके हम भगवान की पूजा करते हैं. And that's not just only for Mahabhagavad also. तो यह सिर्फ महाभागवतों के लिए नहीं है. But throughout the Srimad Bhagavatam alone, there are so many narrations of situations where Lord Vishnu appears at a jagna. तो श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं कि कई ऐसे तथ्य बताए गए हैं कि भगवान विष्णु जो यज्ञ के रूप में प्रकट. He declares in front of so many saints and sages. और जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके समक्ष वो घोषित करते हैं. The Brahmanas are my very self. जो ब्राह्मण हैं वो मैं ही हूँ. Notice his use of language. This is Lord Vishnu. He says like that, declares it in many places throughout the Bhagavatam, not just once or twice. तो भागवतम के कई प्रसंगों में भगवान विष्णु स्वयं यह बतलाते हैं. He says Brahmanas. He doesn't even say pure devotees. वहाँ पे वो शुद्ध वैष्णव भी नहीं बोलते, वो ब्राह्मण बतलाते हैं. So much, you could say, weight that the Lord places on His devotees. So much honor He places on the devotees. तो भक्तों को वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं. Takes pleasure. That's why He takes pleasure in seeing His devotees honored. तो बहुत ही खुश होते हैं जब भक्तों का सम्मान होता है. For example, we go out on preaching programs and we chant and dance and we give some explanation of Krishna consciousness. तो जब हम जाते हैं, प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, भगवत कथा करते हैं. And when the audience, who might be non-devotees or they might be pious, but let's say they're non-devotees. श्रोतागण हैं वो हो सकते हैं कि भक्त ना हो लेकिन ठीक श्रद्धालु होते हैं. When Krishna sees that the so-called non-devotees are appreciating his devotees, he's very pleased, and they will all get immense benefit by respecting the Vaishnavas, just by respecting them. तो मात्र वैष्णवों का सम्मान करके उनको बहुत लाभ होता है. Not by becoming themselves exactly a Vaishnava, but by respecting those that are dedicated to the Lord. And that's the, you could say, the best part of so-called Indian culture is that there's still some respect for those that are devotees. तो भारतीय संस्कृति की बहुत ही अच्छी विशेष बात है कि अभी भी उनको वैष्णवों के प्रति का जो सम्मान की भावना है वो अभी भी है. तो मात्र सम्मान करके ही उनको काफी लाभ मिल जाता है. So we'll continue reading. Offenses at the lotus feet of a devotee are serious. ततः भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं. Chaitanya Mahaprabhu has very strongly recommended that one not commit any offense at the lotus feet of a devotee. श्री चैतन्य महाप्रभु ने जोरदार शब्दों में संस्तुति की है कि किसी को भक्त के चरण. Such offenses are compared to a mad elephant. ऐसे अपराधों की तुलना उस मतवाले हाथी से की जाती है. Hatimata. उसको Hati means elephant. एलिफेंट मतलब हाथी. Because when a mad elephant enters a garden, it causes devastation. जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता है. So please listen to Prabhupada's language. Therefore one should be extremely careful not to commit offenses at the lotus feet of a pure devotee. अतएव शुद्ध भक्त के चरण कमलों पर अपराध ना हो, इसके लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए. Again, the neophyte thinks, well, I'm just surrounded by a bunch of fools. You know, I find they're chanting Hare Krishna, they're dressed in Vaishnava dress, but actually they're all a bunch of fools. Subconsciously, if not consciously, consciously they can't talk like that, or everybody would say, what are you doing in ashram,
तो नव सीखिए इस प्रकार से जो मूर्ख वैष्णवों के साथ कि उस प्रकार से वो करते But subconsciously they're thinking like that, puffed up. तो कुछ ऐसे सोचते हैं बहुत ही अहंकारी और सोचते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा And finding fault, you know. और वह दोष ढूंढते रह जाते हैं। Oh, this guy, he talks too much. अरे ये तो बहुत बात करता है। This guy, he passes error. ये हवा छोड़ता है। You're supposed to translate. So, something, you know, or this guy, he overeats. ये बहुत खाता है। Never mind, I eat twice as much as he does, but that doesn't count because I'm superior to him anyways. तो ये दुगना खाता है। These kind of attitudes lead to fall down. ये तो गिरने वाला है। Lack of appreciation for sadhu sangha. और उसका कोई महत्व नहीं। Anyone who chants Hare Krishna is a sadhu. जिसने एक बार भी हरि नाम ले लिया वो साधु। They may not be top of the line sadhu, but they are sadhu. Try to understand. अगर वो ऊपर वाली स्तर पे नहीं है लेकिन वो साधु है। There is one village. एक गांव है। Mahaprabhu went there 3 times. It's called Kalinigram. और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे Or at 3 least बार was गए। 530 years ago was called Kalinigram. उसको कुलीना ग्राम कहते हैं। Mahaprabhu went there 3 times. और उस गांव में महाप्रभु 3 बार गए। Each time the villagers asked him a question. और हर एक बार वहाँ के जो ग्रामवासी थे उनको प्रश्न पूछते थे। The one of the times that Mahaprabhu went there, their question was, "Who is a Vaishnava?" और एक बार जब वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने उनसे पूछा Mahaprabhu वैष्णव replied, कौन है? "Whoever chants Hare Krishna is a Vaishnava." तो महाप्रभु ने बोला कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि नाम ले लिया वो वैष्णव है। Of course, he didn't say Shuddha Bhakta. उन्होंने ऐसा नहीं बोला शुद्ध He didn't भक्त। say pure devotee. उन्होंने ऐसा नहीं बोला परम But भक्त। Vaishnava. जो So whoever is वैष्णव- chanting Hare Krishna is a Vaishnava. Therefore, we have to offer respect. जो भी हरि नाम लेता है वो वैष्णव है इसलिए वो सम्माननीय है। Not just make everything mundane. You make everything mundane. So those who look around at their fellow devotees and just find fault with them and can't see the good qualities, everything becomes mundane. Their whole consciousness becomes mundane. तो सारी के सारी भौतिक धरातल पे चीजें आ जाती हैं जब हम लोग भक्तों के अंदर अवगुण देखते The हैं। suicide program. We've seen practically devotees who leave the ashram. Sometimes it's because they feel, oh, they don't appreciate me, they don't love me, they don't care anything for me. This, this idea that everything is mundane and devotees are also mundane. तो कई बार भक्त जो आश्रम छोड़ करके जाते हैं भक्तों का संग छोड़ करके जाते हैं उसका एक ही So कारण Srila होता Prabhupada है कि continues. Actually, Maharaja Ambarish was not at all at fault. Durvasa Muni unnecessarily wanted to chastise him on flimsy grounds. तो वस्तुतः महाराज अम्बरीश का तनक भी दोष न था। दुर्वासा मनु ने व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाहते थे। Flimsy means not substantial, not substantial. व्यर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता। Maharaja Ambarish wanted to complete the Ekadasi Purana as part of devotional service to please the Supreme Personality of Godhead. तो महाराज अम्बरीश ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति का अंग स्वरूप एकादशी पारण पूरा करना चाहा। So actually he was doing nirjala. वो निर्जल एकादशी कर देते। But this incident between him and Durvasa apparently took place on must have been Dwadasi, because he wanted to break his fast, but he wasn't going to eat solid foodstuff, so he drank a little water. But for that, Durvasa faulted him, because he was drinking water before offering any foodstuff to Durvasa. This is his Durvasa's complaint, and this is why he took offense. तो दुर्वासा मुनि ने यह आरोप उन पर लगाया कि इस व्यक्ति ने मुझसे बिना पूछे जल ग्रहण कर लिया, पहले मुझसे इसे पूछना चाहिए था। So, although Durvasa Muni was a great mystic Brahmana, he did not know what is what. तो यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी ब्राह्मण थे किंतु वो ये नहीं जानते थे कि यह सब क्या है। That is the difference between a pure devotee and a so-called learned scholar of Vedic knowledge.
तो यह भेद होता है एक शुद्ध भक्त में और एक विद्वान पंडित में. The devotees, being always situated in the core of the Lord's heart, surely get all instructions directly from the Lord. भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान से सारे आदेश प्राप्त करते हैं. As confirmed by the Lord himself in the Bhagavad-gita 10:11. जैसा कि भगवद गीता 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान पुष्टि करते हैं. Tesam ivanuktartam aham agnapajang tamaha nashaya mi atma vavasta jnana dipena vastavata तेषामेव अनुकंपार्थम ज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भासता. Out of compassion for them, I, dwelling in the hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. So he's talking about his devotees specifically. तो खास करके भक्तों के विषय में कृष्ण ऐसा कहते हैं, मैं उनके हृदयों में वास करते हुए उन पर दया करने के कारण अज्ञानजन अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूँ. Devotee does not do anything not sanctioned by the Supreme Personality of Godhead. भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी अनुमति भगवान नहीं देते. So then we understand here we have a definition of devotee. तो यहाँ पे भक्त की परिभाषा बताइए. Pure devotee, in other words, those who are actually considered pure devotee, they do not do anything that is not sanctioned or outside of the blessings and approval of the Supreme Lord. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के संस्तुति के बिना उनके निर्देशन के बिना वो कुछ. When we examine our daily behavior, we're always doing things that are not pleasing to Krishna, hopefully accidentally. अगर हम अपने व्यवहार की अगर हम वो करें निरीक्षण करें तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जब भगवान I can't be a real devotee at all. If I'm purposely doing something to offend the Lord, then how could I call myself a devotee? तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के अप्रियकर चीजें ना करें. But we make mistakes. That's the quality of a conditioned soul. We make mistakes. तो बद्ध जीवों का यह लक्षण है कि वो गलतियां करेंगे ही करेंगे. And in those mistakes we may accidentally offend the Lord. और उन गलतियों में हो सकता है कि हम दुर्घटनावश भगवान का अपराध करें. Well, that's why we have to study the Shastra. तो इसलिए हम सबको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है. To understand what is to be done and what is not to be done. यह समझने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. What is to be said and what is not to be said. क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए. Vacho vega manasa krodha vega. वाचो वेगम मनसः क्रोध. Of course, krodha means anger. क्रोध का मतलब गुस्सा. So vacho vega manasa krodha vega, controlling the tongue. तो हमें अपने जिह्वा को नियंत्रित करना है. This is necessary for one who aspires after being an actual Vaishnava. तो जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफी आवश्यक है. So Prabhupada continues, as it is said, Vaishnava kriya mudra vigneha na bhuyayam. Even the most learned or experienced person cannot understand the movements of a Vaishnava, a pure devotee. तो जैसा कहा गया वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए. यहाँ तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभव व्यक्ति भी No one therefore should criticize a pure Vaishnava. वैष्णव या शुद्ध भक्ति गतिविधियों को नहीं जान सकता, अतः किसी को शुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करनी चाहिए. A Vaishnava knows his own business. Whatever he does is precisely right because he is always guided by the Supreme Personality of Godhead. तो वैष्णव अपने कार्य को सही ढंग से जानता है और वह जो कुछ करता है वह सही होता है क्योंकि वह Because everyone is guided by the Supreme Lord. Everyone is guided. हर एक व्यक्ति जो है वो निर्देशित होता है. Birds are guided in the sky. They fly thousands and thousands of kilometers without any maps, without any radar. पक्षियों के पास कोई रडार नहीं होता लेकिन वो हजारों मील वो तय कर लेते हैं. They don't get lost. वो कभी भटकते नहीं. The fish are swimming in the ocean in their, if you've ever seen the videos, they're dancing in different patterns and going this way and then they're going this way. Which way they're going, that's all guided by Lord Vishnu out of his unlimited mercy.
तो आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा किस प्रकार से समुद्र की जो मछलियाँ होती हैं कितना अच्छा नृत्य करती हैं, तो उनको कौन निर्देशित करता है? वो भगवान ही करते हैं। So if Lord Vishnu is guiding 8,400,000 species of life, तो विष्णु जो है, भगवान विष्णु, वो 84 लाख योनियों के जीवों को मार्गदर्शन देते हैं। otherwise no one can survive in the material world. और अगर ऐसा ना हो तो कोई भी इस भौतिक जगत में नहीं टिक As the सकता। material world is fundamentally martyloka, a place where death takes place. क्योंकि ये जो भौतिक जगत है उसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है, जहाँ मृत्यु अवश्यंभावी है। Unless every living entity is guided by the Supreme Lord Vishnu, तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के द्वारा निर्देशित cannot ना होगा, survive. वो यहाँ पे नहीं रह सकते। so if 8,400,000 species are being guided by Lord Vishnu, तो जब 84 लाख योनियों के जीव भगवान विष्णु के द्वारा निर्देशित हो सकते हैं, on what basis the devotees, or at least who are struggling to become real devotees, fixed devotees, on what basis the Lord is not going to guide them? तो आपको क्या लगता है कि जो भक्त संघर्ष कर रहे हैं एक शुद्ध भक्त बनने के, क्या उनको भगवान मार्गदर्शन नहीं The करेंगे? neophyte should consider this point. जो नवसिखिया भक्त हैं उनको यह सीखना चाहिए। But those neophytes who are contaminated with a subtle atheistic mentality, sometimes not so subtle, तो सूक्ष्म रूप से जो नवसिखिया भक्त प्रदूषित हो चुके हैं, they may sometimes feel neglected by the Lord. उनको ऐसा लग सकता है कि भगवान मेरी अवहेलना कर रहे हैं। Sometimes they will even verbalize their doubt. और कई बार वह अपने शब्दों में इस चीज का बयान कर सकते हैं। So in this way, that's just warmed over atheism. Even if they have their hand on a bead bag, they're chanting Nama Parad. तो यह उनके नास्तिकवाद को दर्शाता है। हो सकता है वो हरिनाम ले रहे हैं लेकिन फिर भी वो नास्तिक हैं। Lord Vishnu is for the non-devotees. तो भगवान विष्णु जो भक्त हैं उनके लिए भी है। Just like Prabhupada said, Paramama is for yogis. तो जो परमात्मा है वो योगियों के लिए। You already know that? Yes? That's good. You already know that? You know that? Paramama is for yogis. You know that, so what's the purport? What's the purport, since you already know? Why does Prabhupada say Paramama is for yogis? तो प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कहते हैं जो परमात्मा हो योगियों के लिए? They meditate in their heart. They meditate on the super soul in the heart. Super soul in the heart. Super soul means Paramama in the heart, yes. Why does he say it's for yogis? तो ऐसा क्यों कहते हैं कि I mean, everybody has a super soul. सबके पास परमात्मा। 8,400,000 species. So why does Prabhupada say Paramama is for yogis? प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ योगियों के लिए? What's your answer? They cannot go beyond Paramatma. They cannot go beyond परमात्मा। Yes, that's true. They can't go beyond Paramatma. तो वो परमात्मा के आगे नहीं जाते हैं। Point is, the devotees are guided personally by Krishna. Tribhanga Krishna with the flute. Krishna is personally guiding even a neophyte devotee. Why? तो एक नवसिखिया भक्त है, उनको भी भगवान श्री कृष्ण ही मार्गदर्शन करते हैं। वो कृष्ण जो त्रिभंग रूप में मुरलीधर है। Because you are chanting Hare Krishna as received from Nityasiddha devotees, Srila Prabhupada, either directly or through his representatives. चूंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और यह मंत्र हमें प्रभुपाद जी And के through his प्रतिनिधियों के माध्यम representatives, से it can be quite diluted, but still is coming from Prabhupada. तो यह जो है प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि Just like शुद्ध when I first heard the Maha Mantra, because Srila Prabhupada had made his glorious appearance in San Francisco at this auditorium called the Fillmore Auditorium, where all the rock concerts were held. तो प्रभुपाद जी के जो पहली बार दर्शन किए महाराज जी ने एक बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ पे डांस होता था। Almost all of the most famous rock bands showed up. It was something arranged by
Shamachandra Prabhu. तो श्याम सुंदर प्रभु ने बड़ा अच्छा आयोजन किया था, उसमें जितने भी रॉक बैंड्स थे बड़े बड़े वो आए हुए थे वहाँ पे, together with Mukunda Maharaj. और मुकुंद महाराज के सहयोग से. So it was a very famous event. So amongst the youth of the area, word spread very fast because the most popular rock bands, they were also chanting Hare Krishna. They were saved by the personal presence of Srila Prabhupada and by the Mahamantra. तो खास करके जो वहाँ के युवा वर्ग थे वो काफी आकर्षित हुए और उनको बड़ा आकर्षण था यह देखने के लिए. So I was living out in the countryside. I did not attend that event. Unfortunately, I was too covered over to attend that event. I didn't have enough security built up. तो महाराज ने वह प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए. Prabhupada was personally there. He was the star of the show, beyond any doubt. तो प्रभुपाद जी उस शो के स्टार थे बिना किसी. There's a picture of that auditorium full of people on the biography that was just released. और उसके फोटोग्राफ भी है जिसमें प्रभुपाद जी. Film Auditorium it was called. Very famous at that time. और उस समय बहुत यह मशहूर इवेंट हुआ था. So I was living on the countryside. और थोड़े गांव वाले एरिया में रहते थे महाराज. It was not exactly a sattvic situation. It was a combination of the modes of nature. Combination of the modes of nature was not purely sattvic, merely because I was out in the countryside. तो वहाँ पे सारे जो गुण हैं उनके सारे मिश्रण वाली जगह में रहते. So because it became a famous event, the Swami and the Mahamantra became, you could say, overnight famous amongst the youth. एक ही रात में युवकों के बीच में बहुत मशहूर हो चुके थे स्वामी जी और उनका महामंत्र. So I first heard the Mahamantra, not directly from Prabhupada. और मैंने जो हरिनाम सुना डायरेक्टली प्रभुपाद जी से नहीं, I first heard the Mahamantra from some hippies. और हिप्पीज के माध्यम से मुझे हरिनाम प्राप्त. But they had heard it from other hippies, or they had been personally present at the auditorium. और वो हिप्पी थे जो उस प्रोग्राम में गए थे जहाँ प्रभुपाद जी ने संकीर्तन किया. So here we see that hippies, covered over by Tamagun and Rajagun, some sattva there also. तो हम देखेंगे हिप्पी जो रजोगुण और तमोगुण से पूर्ण रूप से. They were empowered by Srila Prabhupada. Try to understand it. You want to know who is Prabhupada? Even these fallen souls, covered by illicit sex and intoxication, they were empowered by Prabhupada also to give away the holy name. Try to understand. तो यह समझने की आवश्यक है कि जो लोग आच्छादित थे गलत कार्यों से, अवैध संबंध इत्यादि से, वो भी उनको भी शक्ति मिली प्रभुपाद जी के माध्यम से. ये नित्यानंद प्रभु का. Through even these unqualified persons, the Mahamantra is so strong. तो व्यक्ति कितना भी अयोग्य हो ये कोई मायने नहीं रखता. So I didn't receive the Bhagavad-gita from pure devotees. I didn't even receive the Mahamantra from any devotees at all, really, in the pure sense of the word. From, let's say, some brahmacharis or sannyasis. There weren't any sannyasis. How could I get it from sannyasis? तो उस समय सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं हुआ करते थे, हिप्पी हुआ करते थे. हिप्पियों के माध्यम से मुझे. There was hardly any brahmacharis either. They were pretty spaced out, you know. Only a year before they were hippies, so they weren't real brahmacharis. तो ऐसे हिप्पी थे जो खुले आसमान में रहते थे. So I didn't even receive the holy name from them. I received it from hippies. तो हरिनाम महाराज को हिप्पी के माध्यम से मिला. But Prabhupada's Shakti is so great that even hippies could deliver the holy name, coming from him through a succession of contaminated persons. But because it's coming from Prabhupada, it took me a while to learn how to chant the Hare Krishna mantra also. तो चूंकि यह प्रभुपाद जी के माध्यम से हिप्पीज को भी शक्ति थी वो. So we should keep this in mind in valuing devotees. Keep it in mind. तो हमेशा हमें भक्तों का महत्व देना चाहिए. So we'll stop there. हम यहीं पे विराम देंगे. Any questions, comments? Okay, thank you very much. Jagat Guru Sri Prabhupada ki jai, Guracharya Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Radha Krishna Balaram ki jai, Nitya Gopa Menande. His Holiness Bhakti Madhuri Bhan Maharaj.